Hello lovely people, Radha Tripathi this side and I welcome you all to this in-depth analysis of Rajasthan Judicial Services Prelims Examination 2021. आप सबके पास कभी ना कभी कोई मैसेज तो आया होगा कि आपने जीते 2 करोड़ 10 लाख 5 करोड़ या ऐसे कुछ भी। तो पहला सवाल क्या आता है आपके दिमाग में? अरे मैंने तो खेला ही नहीं तो मैं जीतूंगा कैसे? राइट, मैंने खेला ही नहीं मतलब मैंने इन्वेस्ट ही नहीं करा तो हाउ कैन आई रीप द फ्रूट्स। तो ऐसे ही आपको अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यू नीड टू इन्वेस्ट योर टाइम, योर एनर्जी एंड ऑफ कोर्स योर रिसोर्सेज टू। इफ यू कैन अफोर्ड हेल्प यू मस्ट गेट हेल्प। तो आपको एक ऐसा गुरु ढूंढना है जिसके साथ आपकी लय जुड़ जाए, जिसके साथ ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिसके साथ आपकी वाइब मैच होती हो। आपको एक मेंटोर की जरूरत होती है, क्योंकि मेंटोर क्या करता है, वो बताता है कि नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, कैसे करना है, ऑल्टरनेटिव क्या है अगर इस तरीके से नहीं हो रहा। तो देयर मस्ट बी समबडी हु इज टेलिंग यू ऑल ऑफ दिस। और जो प्रीमियम यूजर्स हैं एड्सॉर्ब के, दे नो व्हाट काइंड ऑफ मेंटोरशिप एड्सॉर्ब प्रोवाइड्स टू यू। ओके, सो फाइंड योरसेल्फ अ मेंटोर, बी इट एड्सॉर्ब और एनी अदर प्लेटफॉर्म, बट ट्रस्ट देम विद द प्रोसेस एंड ट्रस्ट देम व्हाट दे से। आप बार बार चेंज करते रहोगे तो उससे भी नहीं होगा। ऑलराइट, so on this note, without any further delay, let's get started. Okay, let's proceed. See, what is provided here? Rajasthan सेंचुरी एंड नेशनल पार्क्स। आपको पता है कि ये क्यों प्रोवाइडेड है? क्योंकि जो राजस्थान का इंटरव्यू होता है या जो आई थिंक मेंस भी जो होता है, वहां पर राजस्थान स्पेसिफिक कल्चरल क्वेश्चंस आते हैं कि क्या कल्चर है, यहाँ की क्या ज्योग्राफी है, क्या डेमोग्राफी है, उसके बेसिस पे। तो एड्सॉर्ब के साथ आपको मिल जाता है ये उसका राजस्थान स्पेसिफिक जनरल नॉलेज ऑल्सो। ओके, जैसे कि सेंचुरी एंड पार्क्स आर प्रोवाइडेड टू यू, सरिस्का है, डेजर्ट है, रणथंबोर, काला देवघाना इज देयर, and what is the highest peak? Guru Shikhar is the highest peak, and its size is also given to you. And what type of vegetation does it provides? Okay, so what is the state animal? It's camel or chinkara. Second state tree is khejri. State flower is rohida. State bird is green Indian custard. And further, कौन कौन से rivers यहाँ से आते हैं, कौन कौन से यहाँ पे tribes हैं, which festivals occur there like Pushkar Mela, Kotar Festival, Gangor, Teej, and what are the other palaces and places to visit here? उमेद भवन, जोधपुर is called Blue City. तो ये सब आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्म में इधर प्रोवाइडेड है। एंड फर्दर सी रिवर्स ऑफ द इंडिया, चंबल रिवर के बारे में आपको प्रोवाइडेड है कि कहाँ से कहाँ जाती है, ओरिजिन क्या है, डिस्टेंस क्या है। तो जो स्टेट स्पेसिफिक जीके होती है दैट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड टू यू, and that too in a such a colorful way that it remains in your mind. अब जैसे फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया राजस्थान के बारे में पूरा गिवन है कि गंगौर में ऐसे ऐसे होता है। इट फॉल्स अ फोर्टनाइट आफ्टर द होली। सेकेंडली, इट इज सेलिब्रेटेड आफ्टर 18 days. It is celebrated for 18 days in the honor of goddess Parvati. Also the consequent celebration of the हार्वेस्ट। और ऐसे ही तीज के बारे में आपको दिया हुआ है, पुष्कर फेयर के बारे में आपको दिया हुआ है। सी हमारे स्ट्राइक रेट्स एज आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो कि दे आर off the charts, you can see. And Chhattisgarh 2020 we had 91% of the strike rate, and similarly we had 100% strike rate in this paper which I am going to discuss, that is Rajasthan Law 2021. Reason being we focus on the areas जहाँ से questions आते हैं, जो हमारे एड्सॉर्ब बैंक्स होते हैं, ट्रेजर, सिंप्लीफाइड नोट्स, ये सब आपको वही सिखाते हैं और वही उसी चीज की प्रैक्टिस करवाते हैं जिससे कि आपको आगे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो पढ़ो उतना जरूरी जितना, फालतू का आगे पढ़ना ही नहीं है। ऑलराइट, अब नाउ दिस इज लाइक पूरा बाइफरकेट करके आपको प्रोवाइडेड है कि प्रीलिम्स के पैटर्न में कितने कौन से सब्जेक्ट से कौन से क्वेश्चंस आए हैं। जनरली ये एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए जब भी हम किसी स्टेट का पेपर दे रहे हैं। उससे क्या पता चलता है व्हाट आर दी like specific subjects, what are the important subjects जिस पे हमको ज्यादा फोकस देने की जरूरत है, जहां से ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, पर एड्सॉर्ब ये आपके लिए आपको करके देता है। जैसे एविडेंस एक्ट से 6 आए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से 4 आए, तो ऐसे प्रॉपर आपको चार्ट्स मिलते हैं जिससे आपको पता चलता है कि कौन सा सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड विद द क्वेश्चंस। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 1. Under the provision of Specific Relief Act 1963, when a part of contract which is taken by itself can and ought to be specifically performed stands on a separate and independent footing from another part of the same contract which cannot or ought not to be specifically performed, then the court may direct the specific performance of the former part. It will be the discretion of the court to direct or not to direct the specific performance of the former court. The court may direct the specific performance of the former part or none of the above. The correct answer is C here. And this was from the this was the question number 15 of the Edzorb law Q bank. See, section 12 is about the part performance of the contract. तो अब जनरल रूल क्या है? जनरल रूल इज कि पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आपको नहीं करने दी जाएगी, पर सेक्शन 12 उसकी कुछ एक्सेप्शंस आपको बताता है। ठीक है, जैसे ये सपोज पूरा कॉन्ट्रैक्ट है
ये जो इतना पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट का, दिस कैन बी परफॉर्म्ड, बट ये वाला जो पार्ट है ना, ये क्या है, पार्ट दैट कैन नॉट बी परफॉर्म बट एडमिट्स कॉम्पेंसेशन। तो अब इसमें क्या होगा, द पर्सन मे आस्क फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड अवॉर्ड कॉम्पेंसेशन फॉर द पार्ट नॉट परफॉर्म्ड। ओके, अभी पूरा सेक्शन हमको साथ में ही पढ़ना है, क्योंकि ये मेंस में भी आता है, आपके शॉर्ट नोट के क्वेश्चंस में आता है, इसलिए प्रीलिम्स जब अगर आपने बुक में से भी एमसीक्यू सॉल्व करा है तो आपको उसके बाद वो सेक्शन जाके पूरा पढ़ना होगा। जब आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करोगे तभी आप मेंस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। और पता है प्रॉब्लम क्या होती है कि हम ज्यादातर प्रीलिम्स ऑब्सेस्ड होते हैं कि प्रीलिम्स निकल जाए, अरे प्रीलिम्स निकल भी जाएगा तो मेंस की तैयारी कब करोगे, इसलिए हमको मेंस ऑब्सेस्ड होना है। मेंस के हमको बहुत सारे भर भर के क्वेश्चंस लगाने हैं, इवैल्यूएट करवाना है, अपनी गलती को हमको हटाते जाना है। तो मेंस, जैसे कि नेम इटसेल्फ सजेस्ट्स, दैट इज द मेन पेपर, योर सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन दिस एग्जाम ओनली। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन क्या है कि द पार्ट दैट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली परफॉर्म्ड इज कंसिडरेबल पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैन बी ग्रांटेड फॉर द पार्ट दैट कैन बी परफॉर्म्ड इफ द पर्सन pays for the part that can be performed. Third एक condition आती है where the part of the contract cannot be performed and does not admit the compensation. तो कोई बात नहीं, आपको पूरा अमाउंट देना पड़ेगा तभी कोर्ट आपको ग्रांट करेगी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ओके, फोर्थ क्या क्लॉज है, द कॉन्ट्रैक्ट दैट कैन बी परफॉर्म्ड इज ऑन इंडिपेंडेंट फुटिंग फ्रॉम द पार्ट दैट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड। सो ऐसे ऐसे पार्ट है जो कि एक इंडिपेंडेंट पार्ट है, उस पर डिपेंड नहीं करता, जो आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उसमें वो डिपेंड ही नहीं करता, तो वो जो इंडिपेंडेंट पार्ट है दैट कैन बी परफॉर्म्ड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अटैच्ड टू अर्थ डज नॉट मीन ट्रीज, shrubs, growing crops, walls or buildings. The correct answer is growing crops and it was the question number 8 from the Edzorb law you banked. See, अब attached to earth का क्या मतलब है, attached to earth का मतलब है rooted in the earth, embedded in the earth like walls and buildings, attached to what is so embedded, जैसे कि बिल्डिंग इज अटैच्ड है और जो वॉल्स और डोर्स लगे हैं दैट इज एम्बेडेड आ जाएगा। ठीक है, सी रूटेड इन अर्थ हो गए हमारे ट्रीज, सेकेंडली एम्बेडेड इन अर्थ हो गई ये बिल्डिंग्स, थर्डली अटैच्ड टू व्हाट इज सो एम्बेडेड, तो बिल्डिंग्स आर एम्बेडेड बट विंडोज एंड डोर्स आर अटैच्ड टू दैट, तो ये भी हमारे इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ द थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट is a contract of guarantee, warranty, indemnity or none of the above. The correct answer is A and it was from the module 17 of the Edzorb law Q bank, and secondly it was also provided in the simplified notes. Now section 126 क्या है, contract of guarantee। क्या होता है contract of guarantee? The contract to perform the promise to discharge the liability of the third person, मतलब A है और B है और एक बंदा C है, C कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है B के बिहाफ पे कि ये परफॉर्म करेगा कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा गारंटर, ये गारंटी ले रहा है कि बी विल परफॉर्म। ठीक है, अब इसमें तीन टर्म्स आती हैं, श्योरिटी, प्रिंसिपल एंड क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होता है, द पर्सन टू होम द गारंटी इज गिवन, दैट इज ए इज क्रेडिटर है। सेकेंडली प्रिंसिपल डेटर, इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन, ये बी हो गया हमारा प्रिंसिपल डेटर और सी हो गया हमारा श्योरिटी। गारंटी रिटर्न हो सकती है, ओरल हो सकती है। अब इस पे भी मेंस का आपका शॉर्ट नोट होता है, आपने यहाँ से पढ़ना और आपका प्रिपेयर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following statement with reference to section 3 of Indian Evidence Act is not correct? A map or plan is a document, an inscription on the metal plate is a document, a caricature is not a document, that a man said certain words is a fact. The correct answer is C and it was from the simplified notes of the Edzorb law. Document क्या होता है, any matter expressed or described upon any substance by the means of letters, figures, marks or more than any of those means intended to be used or by which may be used for the purpose of recording that matter. ठीक है, inscription on the stone is also a document. These caricatures are also a document. ठीक है, अब ये केस है शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। सी दिस इज क्वाइट द रीसेंट केस, यहाँ पे हेल्ड हुआ था, सीरीज द डॉक्यूमेंट कैन बी एडमिटेड इन द एविडेंस। अब एड्जॉर्ब क्या कर रहा है, आपका काम आसान कर रहा है, आपका टाइम सेव कर रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली टाइम इज वेरी प्रेशियस। टाइम वापस नहीं आता, पैसे वापस आ जाते हैं बट टाइम नहीं वापस आता। तो आपको वहाँ लीडिंग केस लॉज, उसके एक्सप्लेनेशंस, प्रोवाइजोज एंड व्हाटएवर द एक्स्ट्रा फैक्ट, द अमेंडमेंट थिंग, द लीडिंग केस लॉज, सब आपको आपके प्रीलिम्स की जब आपने एमसीक्यू सॉल्व किया उसके बाद ही आपको मिल जाता है। Now the question number 5, if for a period of dash a member of a house of the legislature of the state without the permission of the house is absent from all the meetings thereof, the house seat will be deemed vacant. The correct answer here is 60 days and it was from the constitution, the concept treasures. See, vacating of seats के ऊपर ये the whole thing is provided to you. Here it is provided where a person is absent from all the meetings of the 60 days.
तो ये मान लिया जाएगा कि दैट सीट इज वेकेंट. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, which of the following is not a supplemental proceeding? Appointment of a receiver, granting of a temporary injunction, arrest and attachment before the judgment, granting of a permanent injunction. The correct answer is D, and it was from the module 5 of the Edzorb law Q bank. तो सेक्शन 94 है जो सीपीसी का, दैट प्रोवाइड्स टू यू सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स. ठीक है, तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द एंड्स ऑफ द जस्टिस फ्रॉम बीइंग डिफीटेड, द कोर्ट में क्या क्या कर सकता है? वारंट ऑफ अरेस्ट इशू कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है टू फर्निश द सिक्योरिटी, टू ग्रांट टेम्परेरी इंजंक्शंस, अपॉइंट अ रिसीवर, मेक एनी इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स एंड फर्दर. Okay, now the next question. Under the Code of Civil Procedure Code, in one situation, on the death of that, a lawyer by a party to a suit would be deemed to continue even after the party. What is that situation? Till the pleader inform the court about the death of the party? Yes, this is the correct answer. And it was from the mind maps of the Edzorb law premium. अब सी माइंड मैप्स क्या होते हैं? माइंड मैप जब आपको बहुत सारे फैक्ट्स इकट्ठे याद करने होते हैं, जैसे कि बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, तो आपको हर ऑर्डर का एक माइंड मैप बना लेना है. एड्जॉर्ब के साथ है तो आपको ये बने बनाए मिलेंगे, पर फिर भी आपको ये रीड्रॉ करने हैं और इनको थोड़ा मेमोराइज करना है. एक बार आपने रीड्रॉ करा, माइंड में थोड़ा सा उसको दोबारा से रिकॉल किया, एंड दैट्स इट, यू आर गुड टू गो. एंड और जिनके पास नहीं भी है माइंड मैप्स, वो खुद से बनाए माइंड मैप्स. माइंड मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको चीजें रिकॉल करने में बहुत आसानी होती है और आपको पॉइंट्स की फॉर्म में चीजें याद हो जाती हैं. ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 8. फॉर द पर्पस ऑफ हियरिंग एनी रेफरेंस अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द मिनिमम नंबर ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हु आर टू सिट फॉर द पर्पस शैल बी 3, 5, 7 or 11. The correct answer is B, and it was from the module 15 of the Edzorb law Q bank. Article 145 clause 3 क्या कहता है? The minimum number of judges shall be 5. Why? For the purpose, क्या purpose है? For deciding any case involving a substantial question of law as to the interpretation of constitution, or for the purpose of hearing any reference under the article 143. Article 143 क्या है? It is the advisory jurisdiction. Okay, now we have question number 9. In which of the following case the presumption of the court to the contrary under Art Section 230 of the Indian Contract Act 1872 shall not be presumed? Where the contract is made by an agent for the sale or purchase of the goods for a merchant resident abroad, where the principal does not disclose the name of his agent, where the principal, though disclosed, cannot be sued in all the above cases. The correct answer is B, where the principal does not disclose the name of his agent. And it was from the simplified notes of the Edzorb law premium. Section 230 पढ़ते हैं अब इसमें. The agent cannot personally enforce nor be bound by the contracts on behalf of the principals. Absence of any contract to that effect, an agent cannot personally enforce the contracts entered into him on behalf of his principal. ठीक है, अब जैसे ये आपको एक स्टोरी के फॉर्म में दिया हुआ है. अब yes Shreya, Sneha is saying, Sneha, as an agent, I can neither sue nor be sued on the contracts made by me on my principal's behalf. ठीक है, तो श्रेया कह रही है yes Shreya, only the principal can sue or I can sue the principal on the contracts made by you on her behalf. तो इसलिए एजेंट के सारे एक्ट्स के लिए कौन लायबल होता है? द प्रिंसिपल. ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 10. An advertisement in a newspaper inviting tender is a proposal, invitation for conversation, promise or invitation to proposal. The correct answer is G. Very important concept. ये हमें समझना चाहिए कि what is the proposal and what is the invitation to proposal, क्योंकि इसमें मेंस में भी आता है और इसमें से प्रीलिम्स से देख ही रहे हो आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं. And this was from the module 4 of the Edzorb law Q bank. Okay, now there are few case laws जिसमें बताया है कि what is a offer and what is the invitation to offer. क्या है कि tender is not an offer, it is in the same category of the quotation of the price. ठीक है. Secondly, it's a Deepak Kumar Sarkar case. A party inviting tender is not bound to accept any tender, क्योंकि सिर्फ क्या था? Invitation to offer. Now we have next question, question number 11. What is meant by the statutory interpretation? The interpretation of statute by the Parliament, by the House of Commons, by the courts or by the House of Lords. The correct answer is by the courts. कौन statutes interpret करता है? Of course, the courts only. And this was from our free initiatives, RJS MOOCs. क्या होता है statutory interpretation? The process by which the courts interpret and apply the legislation. Legislation ने अपना statute बना दिया, अब उसको interpret करने का काम करता है court. ठीक है? Okay, now we have next question. Under the Specific Relief Act 1963, any person having the possession or control of a particular article of a movable property of which he is not the owner may not be compelled specifically to deliver it to the person entitled to its immediate possession. In which of the following cases? When the thing claimed is not held by the defendant as an agent or a trustee of the plaintiff, when the compensation in money would not afford the plaintiff adequate relief for the loss of the thing claimed, when it would be extremely difficult to ascertain the actual damage caused by its loss, when the possession of the thing claimed has been wrongfully transferred from the plaintiff. The correct answer is A here.
and it was from the unit 4 of that job law Q bank. Okay, section 8 provides for it. The liability of the person in possession not as a owner to deliver to a person entitled to immediate possession. तो क्या ingredients है हमारे पास section 8 के? That the defendant has the full control and possession and he is not the owner, the plaintiff entitled to immediate possession. This is an important word to remember. The thing is not ordinary article and the article is a movable property. ठीक है, section 7 और section 8 में क्या difference है? Interview का question है, पूछ लेते हैं. That section 7 में the suit can be filed against the owner also, but in section 8 the suit cannot be filed against the true owner. Okay, now we have question number 13. Under the provisions of the Rajasthan Rent Control Act 2001, which of the following is not a requisite regarding the inspection of the rented premises? Prior intimation of at least 7 days shall be given to a tenant. Premises shall be inspected in daytime. Such inspection shall not be carried out more than once in a 3 months. Such inspection shall be carried out only in the absence of the tenant. The correct answer is D. It is not a requisite. ये questions बहुत ध्यान से पढ़ने होते हैं जहाँ पे not लिखा होता है. ये ज़्यादातर करके ये skip हो जाता है और हमारा आंसर गलत हो जाता है. इसके लिए आपको करनी पड़ती है बहुत सारी practice. ठीक है? And this was again from the simplified notes of the Rajasthan Rent Control Act. ठीक है? Section 25 provides for it. अगली बार हो सकता है section पूछ लें, so you need to remember. Now the next question. Any suit filed under the provisions of the Specific Relief Act 1963 shall be disposed of by the court within the period of dash from the date of services of the summons to the defendant. 6 months, 9 months, 12 or 24 months. The correct answer is 12 months. And this was from the unit 4 of that job law Q bank. ठीक है, 20C में ये provided है expeditious disposal of the suits. The suit shall be disposed of by within the 12 months. अब ये क्या है? ये 2018 का amendment है और इसीलिए ये बहुत important है. आगे किसी भी स्टेट के एग्जाम में ये आ सकता है. ठीक. Now further proviso is given to you. The period may be extended for the maximum of 6 months in the aggregate after recording the reasons in writing. So period can be extended also. ठीक है. See, this is what I was telling you, that it was the 2018 amendment. Okay, so now we have question number 15. To enforce a right of preemption, period of limitation is 12 years, 3 years, 2 years or 1 year. The correct answer is 1 year. Okay, and this was from the module 4 of that job law Q bank. What is the right of preemption? The right of preemption is a preferential right to acquire the property by substituting the original vendee. ठीक है, आपको जो preference मिलती है to acquire a right in a property, इसको बोलते हैं right of preemption. The transfer or the sale of the immovable property is a condition precedent to the enforceability of the right. Okay, and it is covered under part 99 and of the schedule under article 97 of the Act of Limitation. Okay, now we have question number 16. Utre magis valiat quam period is also known as the rule of harmonious construction, the rule of reasonable construction, the rule of adjustum generis, or all of the above. The correct answer is rule of reasonable construction. And this was again from the free mocks. I'm telling you, you must do the mock test. Mock tests are available free to all before any of the state examinations, considering the pattern and theme of that state only and the previous year questions. Such mocks are designed. So you will be highly benefited. These mock tests are actually free to everyone. You can tell your friends also that before any of the state examinations, such mocks are conducted, considering the pattern and theme and the previous year questions of those states. ठीक है, तो ये mock test इतने beneficial होते हैं कि आपको definitely इसमें से questions देखने को मिलेंगे. जैसे कि आप इस question paper में देख रहे हैं, पहले भी हम 2 questions discuss करें, and this is I think 3rd question. Okay, now we have question number 17. Under the Code of Civil Procedure, in which of the following case signed does not means stamped? Summon, billable warrant, attachment warrant, judgment. The correct answer is judgment. ठीक है, and it was from the simplified notes of the CPC. Section 2 clause 20 कहता है signed save in the cases of the judgment or a decree includes stamped. ठीक है, judgment और degree छोड़ करके बाकी सब में stamp भी include होगा. ठीक है, now we have question number 18. Which of the following statements regarding the chapter 8 of the TPA relating to of the transfer of an actionable claim is correct? Is incorrect. See, मैंने ही मिस्टेक कर दी. तो ये क्या होता है, एग्जाम में हम इसको करेक्ट पढ़ते हैं और हम गलत लगा के ही आते हैं. बहुत बार ये बहुत ही सीरियस मिस्टेक दैट कैंडिडेट कैन डू इन हिज एग्जामिनेशंस, और ये बहुत ज्यादा लोग करते हैं. तो आपको ये ध्यान से क्वेश्चंस को चाहे आप 2 बार पढ़ें, बट बहुत ध्यान से पढ़ें, देखें कि नॉट तो नहीं लिखा, इनकरेक्ट तो नहीं लिखा, नॉट ट्रू तो नहीं लिखा, और उसके बाद आप आंसर सॉल्व करें. ठीक है, तो अब ऑप्शन नंबर ए क्या है? The chapter applies to instruments which are for the time being by the law or custom negotiable. This chapter does not apply to any mercantile document of the title of goods. The transferee of actionable claim shall take it subject to all the liabilities and equities and to which the transferor was subject in respect thereof at the end of the transfer, and every notice of transfer of an actionable claim shall be in writing. The correct answer is A here, and it was from the module 3 of that job law Q bank.
सेक्शन 30 में प्रोवाइडेड है अबाउट द ट्रांसफर ऑफ द एक्शनेबल क्लेम. सेक्शन 30 डिस्क्राइब्स द मोड ऑफ ट्रांसफर, राइट. कैसे हो सकता है? इन राइटिंग एंड द साइंड बाय द ट्रांसफरर. तो राइटिंग एंड साइंड है, ये भी क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स का है. कभी आ जाएगा राइटिंग सिर्फ साइंड, राइटिंग और साइंड, राइटिंग एंड साइंड. तो आपको पता होना चाहिए कि राइटिंग एंड साइंड है. ओके, एक्चुअली इस एनालिसिस का पर्पस ही ये है कि सिर्फ आपको इसके आंसर्स ना पता चले, साथ ही में आपको पता चले कि कौन से अगले ऑप्शंस जो है वो इनकरेक्ट क्यों है और ये वाला करेक्ट क्यों है. एंड सेकेंडली, आगे आने वाले एग्जाम्स में जो हम एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं उसमें से कई सारे क्वेश्चंस आ रखे होते हैं. तो यही खूबसूरती होती है एक्सप्लेनेशंस पढ़ने की. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 19. The writ jurisdiction of the High Court is wider than the writ jurisdiction of the Supreme Court. Examine the correct answer. Yes, Article 226 can be invoked to establish the fundamental rights and any other right. Very true. Okay, so the correct option is A here, and it was from the Unit 9 of the Edzorb law Q bank. अब रिट पिटिशंस क्या होते हैं? रिट पिटिशंस कैन बी फाइल्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड अंडर आर्टिकल 226 बाय द हाई कोर्ट. पर 32 जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए है, बट जो 226 है दैट डील्स विद फंडामेंटल राइट तो डील करता ही है अलॉन्ग विद द अदर राइट्स ऑल्सो. ठीक है, तो इसीलिए 226 में जो पावर है दैट इज ब्रॉडर देन द आर्टिकल 32 पावर. यहाँ पर आपको प्रॉपर टेबल बना करके कैटेगरी वाइज डिफरेंस प्रोवाइडेड है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर मेंस, for your interview and of course for the prelims also. 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, 226 में हाई कोर्ट के पास है. एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स क्या होता है? 32 इज फॉर द फंडामेंटल राइट्स. अब इसमें क्या है? एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट एज वेल एज अदर लीगल राइट्स ऑल्सो. 32 मैंडेटरी है और ये हाई कोर्ट की पावर डिस्क्रिशनरी होती है. फर्दर आर्टिकल 32 है दैट इज सस्पेंडेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इमरजेंसी एंड आर्टिकल 226 कैन नॉट बी सस्पेंडेड. ठीक है, इसकी वाइड है, इसकी टेरिटोरियल जुरिडिक्शन वाइड है. ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट हैज जुरिडिक्शन ऑल ओवर द इंडिया, बट हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ स्टेट ओनली. ओके, फंडामेंटल राइट. अब आर्टिकल 32 इटसेल्फ इज अ फंडामेंटल राइट, इसीलिए मैंडेटरी है कोर्ट को कि वो रिट्स इशू करे, बट आर्टिकल 226 इज डिस्क्रिशनरी राइट एंड इट्स नॉट अ फंडामेंटल. Okay, so now we have question number 20. Under section 15 of the Limitation Act 1963, the exclusion of time is not applicable to suits, appeal, application for the execution of the decree, all of the above. The correct answer is B, that is appeals. ठीक है, and this was from the simplified notes of the Edzorb law premium. तो section 15 देख लेते हैं. अब सी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ये ऊपर, साथ में ये मेंस का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये आइसोलेशन में भी आ सकता है और ये ऐसे भी आ सकता है कि आपको सेक्शन 9 और सेक्शन 14 और 15 और सेक्शन 12 क्लब करके जो क्वेश्चन बनता है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम का, उसके बेसिस पे भी ये क्वेश्चन आ सकता है. तो देख लेते हैं सेक्शन नंबर 15. तो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, कौन कौन से पीरियड एक्सक्लूडेड होंगे? पहली बात, द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट और एक्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री इज स्टेड बाय इंजंक्शन और ऑर्डर. तो कौन कौन सा पीरियड एक्सक्लूड होगा? एक्सक्लूजन ऑफ द टाइम पीरियड, द डे ऑन विच इट वॉज इशूड, द डे ऑफ इट्स विड्रॉल एंड द टाइम ऑफ द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द इंजंक्शन और ऑर्डर. ठीक है, आगे फर्दर देखते हैं. जब हमको वो लेना होता है द सैंक्शन और द कंसेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट. सी नाउ यू कैन सी दिस विजुअल फ्रॉम द ऑफिस सीरीज, जिसमें दिस मुसद्दी लाल, आई थिंक हिज नेम वाज मुसद्दी लाल ओनली. तो ही वाज सेइंग दैट आई एम कमिंग फ्रॉम द लास्ट 3 months ओनली टू गेट द सैंक्शन. In few days limitation will be over. What should I do? So what he is saying that don't worry, the time for the sanction will be excluded, and we generally don't give sanction before 3 years. ठीक है, this was a bit of dark humor, I would say. Further, the explanation is provided to you कि कौन कौन से पीरियड काउंट होंगे, the date on which the application was made, the date of the receipt of the order of the government. तो ये पूरा आपको इतना सारा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. आपके मेंस का जब आप आंसर लिखोगे तो बहुत यूजफुल हो जाता है, along with this case law also. ठीक है, सो सी दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि हमको प्रीलिम्स एंड मेंस इंटीग्रेटेड अप्रोच रखनी पड़ेगी. हम आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते, क्योंकि जब तक हमारा प्रीलिम्स नहीं क्लियर होता ना, हम इसी में लगे रहते हैं कि हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो जाए. अरे प्रीलिम्स क्लियर करके भी क्या होगा अगर मेंस क्लियर नहीं हुआ तो. सी अब कैसे इंटीग्रेटेड अप्रोच होती है, आई विल शो यू. अब ये क्वेश्चन है प्रीलिम्स का. Equal pay for equal work is not expressly constitutional right. It has been read into the constitution through the interpretation of which other articles. ठीक है, यहाँ पे आपको आर्टिकल्स दिए हुए हैं, ऑप्शंस A, B, C and D. ठीक है, अब इसको देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन आगे. आंसर है इसका B. ठीक है, इक्वल पे एंड इक्वल वर्क का. अब ये पूरा एक्सप्लेनेशन इसके साथ दिया है, तो अगर ये क्वेश्चन मेंस में भी आता है तो आप ये इसकी हिस्ट्री ऑफ द इक्वल पे इक्वल वर्क गिवन है, द केस लॉ इज प्रोवाइडेड टू यू. तो ये पूरा आंसर आपने मेंस में लिखा एंड दैट्स इट. आपको मिलेगा स्टार, आपको मिलेंगे बहुत अच्छे मार्क्स अगर आपने ऐसे लिखा तो. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 21. According to the dash of interpretation, the meaning of the word is to be judged by the company it keeps. Mischief rule, golden rule, noster choices, primary rule. The correct answer is C. And this was from the legal maxims of the Edzorb law premium.
ठीक है, क्या मतलब होता है नॉसिटरस वॉइसेस का? द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज टू बी जज्ड बाय द कंपनी। तो एक आपको प्रॉपर अलग से फोल्डर इज प्रोवाइडेड टू यू जिसमें आपके सारे लीगल मैक्सिम्स गिवन होते हैं। बिहार का पेपर देख लो आप, उत्तर प्रदेश का देख लो, राजस्थान का पेपर जैसे हम देख ही रहे हैं। तो एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इंटरव्यू के क्वेश्चंस में तो देखो कुछ भी पूछ सकते हैं, तो वहां पर लीगल मैक्सिम्स एंड फर्दर अगर आप लीगल मैक्सिम्स अपने आंसर्स में इंक्लूड करते हैं तो आंसर बहुत ब्यूटीफुल हो जाता है। ठीक है, now the next question. Under Rajasthan Rent Control Act, an application made under Section 23 shall be disposed by Rent Authority within dash from the date of the presentation of the application. 120 days, 60 days, 90 days and 30 days. The correct answer is 60 days. And it was from the simplified notes of the Edzorb law premium. Okay, so this chapter is provided to you. Section 23 is provided to you. Again, a mains answer is prepared if you go through all this explanations. Now we have next question. Under the Code of Civil Procedure, which of the following statement is not correct? Decree includes the rejection of the plaint. Decree includes the determination of any question under Section 144. Decree does not include any order of dismissal for default. Decree includes an adjudication from which an appeal lies as an appeal from the order. The correct answer is D. See again, the not correct question is here. Okay. So this was from the simplified notes of that Edzorb law premium. ठीक है, तो सेक्शन 2(2) है ये डिक्री का. डिक्री मीन्स व्हाट? इट इज द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन as the court expressing which conclusively determines the right of the parties with regard to all or any of the matters in the controversy, and it may be either preliminary and or final. और ये भी क्या है? ये आपका है शॉर्ट नोट का क्वेश्चन. डिक्री और ऑर्डर में डिफरेंस आ जाता है आपके मेंस में. ठीक है, व्हाट इट शैल इंक्लूड इज गिवन टू यू. दिस ऑर्डर 7 रूल 11 में जब रिजेक्शन होता है दैट इज अ डिक्री. सेकेंडली 144 के अंदर जो भी क्वेश्चंस डिटरमाइन होते हैं दैट इज अ डिक्री. ये सब क्या माने जाएंगे? डीम्ड डिक्रीज. बट इट शैल नॉट इंक्लूड, व्हाट इट डज नॉट इंक्लूड, एन एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम द ऑर्डर. ये वाला ऑप्शन हमें गिवन था. एन ऑर्डर फॉर द डिसमिसल ऑफ डिफॉल्ट. अब अगले आपके एग्जाम में हो सकता है ये वाला ऑप्शन आ जाए, तो आपने पढ़ लिया तो आपसे हो जाएगा सॉल्व. अब फर्दर पार्ट टाइप्स ऑफ द डिक्रीज आर गिवन टू यू. प्रिलिमिनरी डिक्री, फाइनल डिक्री एंड फर्दर पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल डिक्री. अब प्रिलिमिनरी डिक्रीज क्या है हमारे कोड में, कहाँ कहाँ गिवन है? यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सॉर्टेड तरीके से एक टेबल में आपको प्रोवाइडेड है. और यही है हमारी यूएसपी जिसे कहते हैं ना कि आपको सब चीजें एक साथ मिल जाती हैं. ठीक है, ऑर्डर 20 रूल 12 इज रिलेटेड टू पोजेशन फॉर द मेन प्रॉफिट. एंड आई मस्ट टेल यू ये भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ऑर्डर 20 रूल 14 में क्या गिवन है, तो यू शुड नो दैट इट इज अ प्रीएम्पशन. ये कैसे याद रहेगा? वैसे ऊपर से देखने में तो बहुत डिफिकल्ट लगता है, पर आप जब बार बार पढ़ते हो और बार बार भी कैसे पढ़ रहे हो? एक्टिव लर्निंग के थ्रू. ये नहीं कि आप बैराक उठाया और बस रॉट लर्निंग करे जा रहे हो. दैट वोंट हेल्प यू. आप क्वेश्चन कर रहे हो, आप सोच रहे हो और फिर आप इसको देख रहे हो. तो ये क्या है जो एनालिसिस है ना, दिस इज अ पोस्ट वर्कआउट मील होते हैं ना, जैसे ये वो है. आपने क्वेश्चन किया, सॉल्व किया, अब उसके बाद आप एनालिसिस देख रहे हो कि ये ऑप्शंस क्यों सही है और ये ऑप्शंस क्यों करेक्ट रॉन्ग है. तो इसलिए मैं इसको बोल रही हूँ दिस इज अ पोस्ट वर्कआउट, पोस्ट whatever the post workout thing for you. ठीक है, ठीक है. अब इसका now this distinction, this is again a very important document I must say, कि क्या डिफरेंस है डिक्री, ऑर्डर और जजमेंट में. ये आपके इंटरव्यू में तो पूछते हैं, ऑफ कोर्स मेंस में भी पूछते हैं. डिक्री क्या होती है? इट इज कमेंस्ड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट. ऑर्डर क्या होता है? इट में ओरिजिनेट फ्रॉम सूट बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट और मे अराइज फ्रॉम द प्रोसीडिंग कमेंस्ड ऑन द पिटिशन और ऑन एप्लीकेशन, एंड इट इज बेस्ड अपॉन द फैक्ट्स. फर्दर द डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स, ये कंक्लूसिवली होते हैं, ये पार्टली प्रिलिमिनरी होते हैं, पार्टली ये प्रिलिमिनरी होते हैं और पार्टली प्रिलिमिनरी होते हैं, और ये होता है फाइनल डिस्पोजल के लिए. ठीक है, टाइप्स क्या होते हैं? ये प्रिलिमिनरी होती है, पार्टली प्रिलिमिनरी भी होती है. कोई प्रिलिमिनरी ऑर्डर नाम की चीज नहीं होती और इसके जजमेंट के कोई टाइप्स नहीं होते. ठीक है, और फिर ये केस लॉ आ जाएगा. ठीक है, ऑल दीज आर द लीडिंग केस लॉज इन दिस रिगार्ड. Okay, now the next question. The repealment of the Rajasthan premises, the Control of the Rent and Eviction Act 1950 by Section 32 Clause 1, the Rajasthan Rent Control Act affected which of the following? To anything duly done or suffered under the Act of 1950, to any right acquired under the Act of 1950, to any fine incurred under the provisions of the Act of the 1950, or none of the above. The correct answer is none of the above, and it was from the simplified notes of the Edzorb law premium. ये रहा सेक्शन 32 फ्रॉम द रेंट कंट्रोल एक्ट ऑफ द राजस्थान. आगे बढ़ते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. On application under section 22E of the Rajasthan Rent Control Act, court fee shall be payable at rupees 50, 100, 250 or ad valorem. The correct answer is B. And it was from the simplified notes of the Edzorb law premium. See, section 28 is provided to you of the Rent Control Act.
ठीक है. It is filed before the tribunal would be the same as on the petition and applications and appeals and similar reliefs before the Supreme Court. ठीक है. See, the whole section is provided to you. All right. Now the next question: which of the following statement with the reference to Indian Evidence Act is not correct? Again, not correct. ये टेस्ट इसीलिए होता है, ये देखने के लिए आप कितने अटेंटिव है, हाउ माइन्यूटली यू पे अटेंशन टू द डिटेल्स, कि पूछा क्या हुआ है ये जानना बहुत जरूरी है. ठीक है. तो द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट में बी प्रूव्ड ईदर बाय द प्राइमरी और बाय द सेकेंडरी एविडेंस. प्राइमरी एविडेंस मींस द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट. द काउंटरपार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट एज अगेंस्ट द पार्टीज हु एग्जीक्यूट देम कम्स अंडर द सेकेंडरी एविडेंस. और द डी, oral evidence must be direct. The correct answer is C here. ठीक है. And it was from the simplified notes of the section 60, 61 and 62 of the Edzorb law premium. अब सेक्शन 60 क्या है? ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट. मतलब जिसने देखा है वही जाके बताएगा कि मैंने देखा है. ऐसे नहीं कि मैंने अपने फ्रेंड को बताया कि मैंने देखा तो और मेरा फ्रेंड जाके कोर्ट में बता रहा है. और यही चीज अप्लाई होगी देखने में, सुनने में, या फिर इट इज परसीव्ड बाय एनी ऑफ द सेंसेस. और अगर किसी इंसान का कोई ओपिनियन है तो उस जिसका भी ओपिनियन है दैट विटनेस शुड बी इन द कोर्ट. ठीक है. फर्दर इसके कुछ आगे वो है कि बाय द प्रोडक्शन ऑफ ट्रीटी, अगर कोई ऑथर है बुक का उसके बारे में कोई एविडेंस है तो बाय द प्रोडक्शन ऑफ ट्रीटी में वो प्रूफ किया जा सकता है. इफ द ऑथर कैन नॉट बी फाउंड, कैन नॉट बी कॉल्ड विदाउट द डिले एंड अनरीजनेबल एक्सपेंस, इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस और ही इज डेड. Now the chapter 5 is related to section documentary evidence. Section 61 proof of contents of the document कैसे proof किए जाएंगे? Either by the primary evidence or by the secondary evidence. Section 62 provides what the primary evidence is और ये उसके explanations हैं. Primary evidence क्या होंगे? अगर कोई document several parts में execute है तो then each such part is a primary evidence. ठीक है. Secondly, if the document is executed in the counterpart, then each counterpart being executed by one or some of the parties only, then each counterpart is primary evidence against the parties executing it. अब देखो, इसको हम समझते हैं इस एग्जाम्पल से. सपोज ये डॉक्यूमेंट ए है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट शोइंग आई हैव रिसीव्ड द पेमेंट, ये इसके पास डॉक्यूमेंट है. सेकेंडली डॉक्यूमेंट शोइंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू मी, ये है डॉक्यूमेंट बी. अब जो डॉक्यूमेंट ए है वो प्राइमरी एविडेंस है फॉर द गर्ल और सेकेंडरी एविडेंस है फॉर द बॉय. ठीक है. अब आगे देखते हैं. द केस लॉ इज प्रोवाइडेड टू यू. ऑल राइट. Now the next question number 27. Under which section is provided that in all civil proceedings, the any party to the suit shall be a competent witness? किसमें provided है? Section 120, 121, 122 और 126. The correct answer is section 120, and it was from the simplified notes of the Edzorb law premium. 120 क्या है? Husband and wife are the competent witness. Now we have next question. Pending proceedings in a representative suit, the dispute is settled. Plaintiff and defendants, they jointly filed an application to record between was allowed. The suit was decreed in the terms of the settlement. Is there any procedural irregularity? तो इसका आंसर है D. Yes, the court cannot grant permission without following the due procedure, being a representative suit. ठीक है. And this was the question number 20. It was from the module 25 of the Edzorb law Q-Bank. Okay, now the next question. Which of the following statement regarding the gift under the Transfer of Property Act is correct? Gift is a transfer of certain future movable or immovable property made voluntarily and without consideration. Transferor is known as donee and transferee is known as donor in gift. If the donee dies before acceptance, the gift is void or none of the above. The correct answer is C. ठीक है. And this was from the module 4 of the Edzorb law Q-Bank. अब ये पूरा आपको प्रोवाइडेड है. एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट मस्ट बी मेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द डोनर एंड व्हाइल ही इज स्टिल केपेबल ऑफ गिविंग. नाउ क्वेश्चन नंबर 30. अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रोविजंस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन इज मेड इन 9th schedule, 10th schedule, 11th and 12th. द करेक्ट आंसर इज इन द 10th schedule. ठीक है. ये दिस वाज फ्रॉम द सिंप्लीफाइड नोट्स ऑफ द एंटी डिफेक्शन. सिंप्लीफाइड नोट्स क्या होते हैं? कोई भी चीज को आपको सिंपल तरीके में प्रेजेंट कर देना इज सिंप्लीफाइड नोट्स. और एड्जॉर्ब के सिंप्लीफाइड नोट्स आर जस्ट वे टू गुड. एंड यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन सिंप्लीफाइड नोट्स बाय रीडिंग द बेयर एक्ट्स एंड द कमेंट्रीज, और फिर उसको आप अपनी सिंपल लैंग्वेज में एग्जाम्पल्स के साथ लिख लीजिए. वो आपको बहुत देर तक याद रहता है और आपको एग्जाम में लिखने में बहुत आसानी हो जाएगी और आपको समझने में भी बहुत आसान हो जाता है. ठीक है. Now question number 31. Section 87 of Indian Evidence Act provides presumption as to certified copies of the foreign judicial records, presumption as to books, maps and charts, presumption as to the telegraphic messages, presumption as to due execution, etc. of document not produced. The correct answer is B.
सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है. दिस वाज फ्रॉम द सेक्शन 87 ऑफ द एड्सॉर्ब लॉ प्रीमियम. ये प्रोवाइडेड है आपको. ओके, ये एक टेलीग्राफ है. पहले चलते थे, अभी भी शायद मेरे ख्याल से बहुत कम चलता है. आई थिंक बंद हो चुके हैं. ओके, नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन. Section 32, question number 32. Which of the following is not defined under Section 2 of the Limitation Act? Bill of exchange, bond, check, or promissory note. The correct answer is check. And this was from the Section 2 of the Edzorb law premium. Section 2C defines the bill of exchange, and bill of exchange includes hundi and check. Okay. And Section 5 of the Negotiable Instrument Acts provides for what is bill of exchange. अब बिल ऑफ एक्सचेंज के क्या इंग्रेडिएंट्स हैं? फर्स्ट, इट इज अ रिटन अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे. ठीक है, कंफर्म ऑर्डर टू मेक पेमेंट एंड शुड बी साइंड बाय द पार्टीज. अमाउंट पेड ऑन डिमांड और द एक्सपायरी ऑफ द फिक्स्ड टाइम. डेफिनेट सम ऑफ मनी शुड बी देयर. अमाउंट पेड और बेनिफिशियरी और अगेंस्ट द डेफिनेट ऑर्डर. ठीक है, ये दिस इज एन सैंपल फॉर द बिल ऑफ एक्सचेंज. ओके, 2D provides for the bond. All right. Now question number 33. Under the Indian Contract Act, the requisite for the valid ratification is knowledge of the correct facts of the case, interest of the person ratifying in the case, right of the person ratifying in the case, liability of the person ratifying in the case. The correct answer is A. And it was from the section 198 of the Edzorb law premium, simplified notes. Okay, now the next question. Under the Limitation Act, which of the following is not a correct definition? Again, not a correct definition. Read the questions very, very carefully. Tort means a civil wrong which is exclusively the breach of a contract or the breach of trust. Suit does not include an appeal or an application. Foreign country means any country other than India. None of the above. The correct answer is A. Okay, and this was from the Limitation Act, simplified notes. Foreign country provided at 2G में. 2I provides for the suit. ये सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको आते हैं. 2M is for the tort. Now there is a difference is provided to you between the law of tort and law of contract. क्या definition है? In tort the liability arises due to the infringement of other. Law of contract क्या होता है? Liability arises due to the non-fulfillment of the duty arising from the contract between the agreement between the two people. ठीक है, and there are now the differences between on the basis of violation. Governed by, it is not governed by any specific law. Torts के लिए कोई specific law नहीं है, but derived from the precedents. But it is governed by the specific law, that is Indian Contract Act. Damage क्या है? The measure of the damage is not strictly limited or not is capable of being indicated with the precision. But contract में क्या होता है? The measure of the damage is generally more or less nearly determined by the parties. Okay. Now the next question. The concept of free legal aid takes its root from which article of the Constitution of India? 30, 39, 38, 39A. The correct answer is 39A. Okay, and it was from the Edzorb law Q bank, and these many questions from the various units. All right. Now see, all the directive principles are provided to you. और जो directive principle of state policy है उनको further classify हम कर सकते हैं, जैसे कि ये है socialistic principle. इसमें कौन कौन से articles आ जाएंगे? 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 47 और ऐसे ही और भी कई basis पे इनको वो कर सकते हैं. 39A leads to equal justice and free legal aid. Now further article 43 is related to living wages and of the workers. 44 is uniform civil code. Frequently asked question. Article 50, separation of judiciary from the executive. Now question number 36. Order made under section 144 of the Code of Criminal Procedure shall not remain in force for more than dash from the making thereof. 2 months, 3 months, 6 months, 1 month. The correct answer is 2 months. Very important question. Exam area का question है ये. And this was from the section 144 of the Edzorb law premium. 144 is related to what? The power to issue the order in urgent cases of the nuisance or the apprehended danger. Ex parte भी इसको हम कर सकते हैं. Order can be directed to, किसको डायरेक्ट किया जा सकता है ये order? To a particular individual, to a public generally when frequenting or visiting a particular place or area or person residing in a particular place. ठीक है. Now order can remain in force for the 2 months. Extension भी किया जा सकता है कब? When state government considers this necessary. Why? To prevent the preventing the danger to human life, affray, riots or danger to the human health and safety. Further, not exceeding 6 months from the date on which the ऑर्डर वॉज मेड, मतलब मैक्सिमम ये 6 months तक इसको ले जा सकते हैं. फिर ऑल्टरेशन ऑफ द ऑर्डर कैन ऑल्सो बी डन बाय द एनी मैजिस्ट्रेट. कब करेंगे? ऑन हिज ओन मोशन और बाय द पर्सन अग्रीव्ड.
हो गया ना आपका मेंस का आंसर भी प्रिपेयर। अगर 144 के ऊपर आ गया तो ये आपका मेंस का भी आंसर साथ में प्रिपेयर हो गया। नाउ द मैजिस्ट्रेट में पास ऑर्डर बाय हिमसेल्फ और बाय द मैजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम और हिज प्रीडिसेसर इन द ऑफिस। नाउ फर्दर द प्रोसीजर इज गिवन टू यू। द लीडिंग केस लॉज जस्टिस के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें 4 फोल्ड टेस्ट आपको प्रोवाइड किए गए थे टू चेक द प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ। It can come in any of the other exams also. ठीक है, तो क्या टेस्ट थे? A measure which is restricting a right should be legal. It should be a satisfactory means of making progress in a legitimate goal. There must not be any less restrictive but equally effective alternative. Right holder should not get affected by the measure. जैसे इंटरनेट शटडाउन हो जाता है कई एरियाज में जब कोई राइट्स वगैरह होते हैं, तो ये आया था गौरव सुरेश भाई व्यास वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। Now see if this question can be asked in the interview कि how vigilant you are in respect to the legal cases around you. ठीक है, और इसी केस में the court differentiated between section 69A and section 144. Okay, now the next question. Question number 37. Under section 32 of the Protection of Children from Sexual Offences Act, a person shall be eligible to be appointed as a special public prosecutor only if he had been in practice for not less than 3 years, 7 years, 5 years or 2 years. The correct answer is 7 years. And it was from the simplified notes of the Edzorb Law Premium. Now we have question number 38. Under the Protection of Women from Domestic Violence Act, which of the following statement regarding the protection officer is correct? Protection officer is not a public servant. Penalty is prescribed for not discharging the duty by the protection officer. A first information report can be lodged for the offence committed by the protection officer, or none of the above. The correct answer is B. And see, this many times it has been repeated. And it was from the simplified notes of the 30, 33 and 35 of the Edzorb Law Premium. Alright, section 30 is given to you here. 33 is provided. Further ये देखो, ये भी तो questions हैं prelims के, अभी पढ़ लोगे तो अगले prelims के लिए आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, imprisonment of either description for the term may extend to 1 year or with the fine which may extend to 20,000 rupees or with both. Now section 35 is given to you. Okay. Now the next question. Under the provisions of section 105A of the Code of Criminal Procedure, identifying includes establishment of the proof that the accused is related to the commission of an offence, establishment of a proof that the property was derived from the commission of an offence, test identification period of the accused and the property, or none of the above. The correct answer is B. And it was from the simplified notes of the Edzorb Law Premium. ठीक है, अब ये एरिया तो ज्यादातर करके पढ़ा नहीं जाता, पर हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि प्रीलिम्स में तो एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है ना। Question number 40. While releasing the offenders after admonition under the Probation of Offenders Act, which of the following fact need not to be taken into consideration by the court? The number of previously agreed registered cases against the accused, the nature of offence, character of the offender, or the punishment provided. The correct answer is A here. And it was from the simplified notes of the Edzorb Law Premium. तो क्या क्या चीजें देखी जाएंगी? फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, पर्सन गिल्टी अंडर दीज सेक्शंस, offense punishable with imprisonment not exceeding 2 years or fine or both, nature of the offense and the character of the offender. So if the above conditions is fulfilled, the court may release the offender on probation of good conduct under section 4 and release him after due admonition. ठीक है, डांट डपट के उसको रिलीज कर दिया जाएगा। So admonition का क्या मतलब होता है? Admonition means the censure which if not obeyed may be followed by the severe penalty. ठीक है, question number 41. With reference to section 90 of the Indian Penal Code, the consent of child means consent of a person given by a person who is under 15 years of age, 14 years of age, 13 years of age, or 12 years of age. The correct answer is D. That is 12 years of age. And it was from the Edzorb Law Bare Act Revolution, section 90. तो consent का क्या मतलब है section 90 में? The consent must be given without the fear of injury, without a misconception of the fact. कोई misconception नहीं होना चाहिए और without any fear of injury होनी चाहिए। ठीक है? Alright. Further ये क्या प्रोवाइड करता है कि कोई कंसेंट नहीं मानी जाएगी if the person is of unsound mind. Thirdly, intoxicated person or the person unable to understand the consequences, उससे भी कंसेंट नहीं मानी जाएगी. And further, no consent of the child under 12 years of the age. ठीक है, तो इनवैलिड कंसेंट के क्या क्या है हमारे पास ग्राउंड्स? Child under 12 years, unsound and intoxicated, fear of injury and misconception of the fact. सेक्शन 13 में भी है कंसेंट प्रोवाइडेड। तो अब हमने आईपीसी के सेक्शन 90 को लिंक कर दिया सेक्शन 13 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। ये लिंकिंग भी बहुत जरूरी होती है, एग्जामिनर पे बहुत अच्छा इसका इंप्रेशन पड़ता है। तो सेक्शन 13 क्या कहता है? 13 में कंसेंट का क्या मतलब है? इट मींस 2 or more persons agree upon the same thing in the same sense. इसका मतलब होता है, इस टर्म को हम ये भी बोलते हैं consensus ad idem। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42. Under Indian Penal Code 1860, which of the following is not a punishable offence? Making preparation to commit murder, dacoity, waging war against the government of India,
or depredation on territories of the power of peace with the government of India? The correct answer is A. Preparation to commit murder is not a punishable offense. All right. And this was from the simplified notes of the section 399, 122 and 126 of the Edzorb law premium. 399 में क्या है प्रोवाइडेड? अब ये जो हमारे बाकी के ऑप्शंस थे अब हम उनको पढ़ रहे हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये भी एग्जाम्स में आते हैं, हमको भी पता चलेगा क्यों ये वाला ही ऑप्शन सही था और ये वाले ऑप्शंस गलत थे, ठीक है? तो whoever makes any preparation for committing the dacoity 399 में पनिशेबल है. फर्दर कलेक्टिंग आर्म्स सेक्शन 122 में पनिशेबल है. कलेक्टिंग आर्म्स इंटेंशन टू वेज वॉर होती है अगर. फर्दर कमिटिंग डेप्रेडेशन और मेक्स और प्रिपेयर्स टू कमिट डेप्रेडेशन, तो ये 126 में है. All right. Now question number 43. A prosecutes B for adultery with C, A's wife. B denies that C is A's wife, but the court convicts B of the adultery. Afterwards, C is prosecuted for bigamy in marrying B during A's lifetime. C says that she never was A's wife. The judgment against B is irrelevant against C, is relevant against C, is conclusive proof against C, or is proved fact against C. The correct answer is irrelevant. And this was from the illustration of the section 43 provided by the simplified notes of the Edzorb law premium. ठीक है, ये section 43 आपको provided है. This section is based on which maxim? ये वाला maxim. इसका क्या मतलब है? The matter adjudicated between one set of person does not prejudice other. ये क्वेश्चन भी आपका मेंस में आता है. मेंस में अगर आप ये मैक्सिम लिखोगे, इसका मीनिंग लिखोगे एंड फर्दर इसको एक्सप्लेन करोगे, कितना प्यारा आंसर लिखेंगे. जनरल रूल क्या है? द जजमेंट्स, ऑर्डर्स और डिक्रीज आर इररिलेवेंट, बट इस जनरल रूल की कुछ एक्सेप्शंस हैं. क्या एक्सेप्शंस है? वो प्रोवाइडेड है सेक्शन 40 में, 41 में और 42 में. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 which who may be designated as a child welfare officer. अब सी इसमें ये कुछ इसके ऑप्शंस गलत थे, इसलिए दिस आंसर वाज डिलीटेड बाय द इनऑफिशियल आंसर की. पर ये सेक्शन 107 में से था, तो उसको उसकी एलिजिबिलिटी और फंक्शंस इज प्रोवाइडेड टू यू हियर. Okay, now the next question is question number 45. Under the provisions of the Protection of Women from the Domestic Violence Act, which of the following statements regarding the protection order is wrong? A breach of the protection order is an offense under the said Act of 2005. Upon the sole testimony of the aggrieved person, the court may conclude that an offense under subsection 1 of the section 31 has been committed by the accused. The breach of the protection order is a non-cognizable offense or is a non-bailable offense. The correct answer is B. All right, and it was from the Edzorb law premium 2.0 section 31 of the BV Act. See, section 31 is provided. Penalty for the breach of the protection order by the respondent क्या है? Punishable with क्या हो जाएगा? Which may extend to 1 year and the fine may extend to 20,000 rupees or both. All right, and the offence shall be tried by the same magistrate by whose order is breach. And while framing charges under this subsection 1, if the facts so suggest, the magistrate, मतलब सिर्फ इसी सेक्शन के अंदर अगर मैजिस्ट्रेट को ठीक लगता है तो 498 और डाउरी प्रोहिबिशन के अंडर भी चार्जेस फ्रेम कर सकता है. ओके, दिस इज द केस लॉ विद रिगार्डिंग दिस इंपॉर्टेंट वन. कंचन वर्सेस विक्रमजीत सेतिया. सेक्शन 32 रिलेट्स विद द कॉग्निजेंस एंड प्रूफ. Okay, now question number 46. Under section 17 of the Probation of Offenders Act 1958, rules can be framed by the central government, state government, central government with the approval of the state government with the approval of the central government. The correct answer is D. Okay, and this was from the simplified notes of the Edzorb law premium. So the matters on which the government can make rules, कौन से matters हैं? Upon the duties, any other matter, remuneration and the appointment. अपॉइंटमेंट कर सकता है द स्टेट गवर्नमेंट, ड्यूटीज बता सकता है, कंडीशंस बता सकता है, रेम्यूनरेशन एंड एक्सपेंसेस एंड सब्सिडीज और एनी अदर मैटर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. Now we have next question, that is on question number 47. Z's will contains these words: I direct that all my remaining property be equally divided between A, B and C. A dishonestly scratches out B's name, intending that it may be believed that the whole was left to himself, and C, what offense A has committed under Indian Penal Code. Okay, this is the clear-cut case of the forgery. And this was from the simplified notes of the section 464 by the Edzorb law premium. 464 deals with the making of the false document. क्या मतलब होगा? Who dishonestly or fraudulently makes, signs, seals or executes. इनमें से कुछ भी करा है dishonestly or fraudulently तो क्या माना जाएगा कि आपने forgery की है. Secondly, makes or transmits any electronic record, affixes any electronic signature, makes any mark denoting the execution of the document, and with the intention of causing it to believe that such a document or the part of document was made, signed, sealed, executed, transmitted, affixed by or by the person of authority. ठीक है,
and by whose authority he knows that he was not made, signed, sealed, executed or affixed. The case law with respect to this is given to you. Further, it is provided that preparation of forgery is not an offense, and the second clause is provided to you. क्या है second clause? Who without lawful authority dishonestly or fraudulently by cancellation or otherwise alters the document after it has been made. मतलब कुछ बन गया, जैसे कि हम चीटिंग करते हैं ना स्कूल में बच्चे, मतलब मैंने तो नहीं करी पर काफी लोग करते हैं कि एग्जाम का पेपर आया, 10 में से आए हैं आपके सपोज 0 मार्क्स, आपने वो 0 को बना दिया 8, तो ये क्या हो गया? आफ्टर द डॉक्यूमेंट हैज बीन मेड, आपने उसको ऑल्टर करा है, ठीक है, मेकिंग ऑफ द फर्स्ट डॉक्यूमेंट. ऑल राइट. थर्डली क्या है? अब जिसने भी साइन, सील या एग्जीक्यूट या फिर ऑल्टर करा है, ठीक है, knowing that such person by reason of unsoundness of the mind or intoxication cannot, or that by reason of deception practiced upon him he does not know the contents of the document or the electronic record or the nature of the alteration. Now further explanations are provided. This is a huge section and a whole fledged answer question in itself. तो forgery के ऊपर एक proper आपको बड़ा questions भी आ सकता है, ठीक है. explanation पढ़ लोगे तो आपका हो जाएगा, इससे बाहर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. Now question number 48. Evidence in the proceedings of 125 of the CRPC shall be recorded in the manner prescribed for the summons case, warrant case, by the court's discretion or the summary trial. The correct answer is A. ठीक है, सेक्शन 126 में ये प्रोवाइडेड है. और क्या प्रोवाइडेड है 126 में? ज्यूरिसडिक्शन प्रोवाइडेड है. क्या ज्यूरिसडिक्शन होती है? वेयर द पर्सन इज, where the person or his wife resides, where he last resided with his wife or the mother of illegitimate child. And further, जो भी evidences in such proceedings must be taken. Further, all the evidences must be taken by in the presence of such person or the pleader. ठीक है, pleader से कब होंगे? जब उनकी जो attendance है that is dispensed with. All right. Ex parte hearing can also take place. Okay, so now the next question, question number 49. The Indecent Representation of Women Prohibition Act 1986 is published in the Gazette of India on which date? 23rd December, 1st April, 25 September or 2nd October. See, official answer की के हिसाब से the correct answer is A. But according to me, it's 2nd October 1987. I have checked on Google, तो उसमें ऐसे ही लिखा हुआ है. Okay, see, the actual date of enforcement was 2nd October 1987. और in fact, कैसे हम इसको learn कर सकते हैं? That was गांधी जयंती. But official answer की मैं answer A दिया हुआ था. All right, now the next question. For the purpose of section 141 of the Negotiable Instrument Acts, the company does not mean a body, corporate, firm, group of individuals, association of individuals. The correct answer is C. Group of individuals. And this was from the module 14 of the Edzorb Law Q Bank. Now we have next question, question number 51. Where an offence under Juvenile Justice Act is punishable with imprisonment for less than 3 years, then such offence shall be cognizable, bailable, triable by the magistrate of the first class, magistrate cognizable, non-bailable and triable by the magistrate of the first class. See, कितने similar options हैं यहाँ पे, bailable है, यहाँ non-bailable है. So unless you pay attention, you are surely going to mark it wrong. ठीक है, non-cognizable, bailable and triable by the any magistrate. So the correct answer is C only. All right, and it was from the simplified notes of the Edzorb Law Premium. Section 86 में classification of offences and the designated courts is provided. Now the next question. Offence under section 232 of Indian Penal Code is cognizable, non-bailable, triable by the court of session. Yes, it is the correct answer. And it was from the simplified notes of the Edzorb Law Premium. 232 किससे related है? Counterfeiting of the Indian coins. ठीक है, कितनी punishment है? Imprisonment for the life और imprisonment up to 10 years और fine. अब सी, ये कुछ न्यूज आइटम्स हैं जो इससे रिलेटेड न्यूज में थे. उपकार एंड स्वीकार लूथरा, फेक करेंसी मेकर्स, रैन अ syndicate. Second interesting fact, they converted a house into a JJ clusters into a makeshift factory. They procured raw material like metallic sheets from Mayapuri and Tilaknagar, minting and circulating fake coins with a face value of around 50 crores. Socho. All right, so now the next question. Provisions of section 3 to 13 of the Protection of Children from the Sexual Offences Act shall not apply in the case of medical examination or the medical treatment of the child when such medical examination or medical treatment is undertaken with the consent of the child himself. Such medical examination or medical treatment is undertaken with the consent of the court. Such medical examination or medical treatment is undertaken with the consent of his parents. Such medical examination or medical treatment is undertaken under the direction or the presence of the police officer. The correct answer is C here. And it was from the simplified notes of the Edzorb Law Premium. अच्छा, कभी ऐसा होता है कि जैसे हमने प्रिपरेशन की, कोचिंग करी या कुछ भी, और उसके बाद हमारा पढ़ने का मन नहीं करता, हम लाइब्रेरीज ढूंढ रहे होते हैं, हम घर पे बैठ के पढ़ नहीं पाते,
तो एड्जॉर्ब एक स्टडी स्पेस आपको प्रोवाइड करता है, वर्चुअल स्टडी स्पेस, जहां पर बैठकर आप पढ़ाई कर सकते हैं, जहां पर आप और लोगों को भी पढ़ते हुए देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब जैसे आपके कोई एग्जाम्स होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, तो आप अपने घर में बैठ करके इन द फ्रंट ऑफ कैमरा आप वो टेस्ट करते हैं, क्योंकि जब आप बिना कैमरा के, जब कोई आपको नहीं देख रहा होता, तो ये टेंडेंसी है, दिस इज ह्यूमन टेंडेंसी, हम चीटिंग करते हैं। तो वर्चुअल स्टडी स्पेस में योर हैंड शुड बी विजिबल व्हाइल यू आर राइटिंग द आंसर, और इस तरह से आपके टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं। इट इज ऑपरेशनल हेडेक फॉर द एड्जॉर्ब, but for the sake of this students they do it, because we're a group of small team jahan par a person is sitting and continuously monitoring whether you are writing the answers without cheating or not. ठीक है, तो आप उसका प्रॉपर यूज कर सकते हैं, और ये कितना अच्छा प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड हो जाता है कि आपको कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट में मॉक टेस्ट देने जाने की जरूरत नहीं पड़ती। Now we have next question, question number 54. Under the Code of Criminal Procedure, security for good behavior from the person disseminating seditious matters can be demanded by Magistrate of the first class, Chief Judicial Magistrate, Session Judge, or Executive Magistrate. The correct answer is D, and it was from the simplified notes of the Edzorb Law Premium. The whole section is provided to you here. All right. Now the next question. Which of the following statement in respect to section 320 of the Code of Criminal Procedure is not correct? Again, the not correct. The composition of an offence before charge shall have the effect of the accused. No offence shall be compounded if the accused is, by the reason of previous conviction, liable to enhanced punishment. When an appeal is pending, no composition for the offence shall be, all without the leave of the appellate court. The person competent to compound an offence is dead. The legal representative of such may, with the consent of court, compound such offence. The correct answer is A here. And this was from the simplified notes of the Edzorb Law Premium. All right, so compoundable offences क्या होते हैं? Compoundable offences होते हैं वो offences जहाँ पे complainant जो है वो accused के साथ compromise कर लेता है। ठीक है, मतलब आपका आपसी म्यूचुअल सेटलमेंट हो जाता है कि ठीक है, I will drop all the charges against you. ठीक है, जैसे कि ये पिक्चर में आप देखो, this is a kid who has stolen some money and saying, I got all money, mama will be so proud of me. ठीक है, now he's behind the bars and he's saying, I will return you all the money. So this person is saying, okay, I'm ready to drop all the charges. तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? एक compromise, क्योंकि ये compoundable offences है। ठीक है, अब नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं? वो ऑफेंसेस जो कंपाउंडेबल नहीं है, ये सीरियस नेचर के ऑफेंसेस होते हैं, जैसे रेप हो गया, मर्डर हो गया। इवन इफ यू वांट टू ड्रॉप द चार्जेस अगेंस्ट इन दीज केसेस, तभी भी आप ये नहीं कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पर आपको मेन ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइडेड हैं कि 41st लॉ कमीशन की रिपोर्ट ने प्रेजेंट सीआरपीसी में क्या चेंजेस लाने के लिए सजेस्ट किया था। दैट वाज अबाउट द म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड रिफॉर्मेशन, एमिकेबल सेटलमेंट, एक्सपीडियस रेजोल्यूशंस एंड रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ द कोर्ट्स। तो जब कॉम्प्रोमाइज होता है जब कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में, तो दैट रिड्यूसेस द बर्डन ऑफ द कोर्ट्स, बिकॉज आवर कोर्ट्स आर ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड विद द केसेस। Okay, now 320 का जो clause 1 है, that provides the cases which are compoundable without the permission of the court. Okay, so like these are the offenses under 298, 323, causing hurt by provocation, 334. ठीक है, और जो इसका सब clause 2 है, that provides the cases when the offense can be compounded with the permission of the court. Let's see, this is the clause 2. It provides for the table when the offenses are compoundable with the permission of the court. ठीक है, थोड़े से ये क्लॉज 1 वाली टेबल से थोड़े से सीरियस नेचर के ऑफेंसेस हैं, जैसे कि कॉजिंग मिसकैरेज, वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट 323 तो कंपाउंडेबल है और ग्रीवियस हर्ट भी कंपाउंडेबल है, बट कॉजिंग हर्ट इज कंपाउंडेबल विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट ऑल्सो, बट causing grievous hurt is not compoundable unless the court gives the permission. All right, तो ये offense की डिग्री के हिसाब से इनको bifurcate किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर क्लॉज 3 क्या कहता है? इट सेज इफ ऑफेंस इज कंपाउंडेबल, तो उसका जो अबेटमेंट होगा, अटेम्प्ट होगा, लाइबिलिटी अंडर सेक्शन 34 एंड 149 जो होगी, वो सब भी कंपाउंडेबल होगा। ऑल राइट, नाउ द क्लॉज 4, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज है। It can come into your mains and as well as in your prelims examinations, that when the person who would otherwise be competent to compound in this section is under 18 years, is a lunatic, idiot or dead, तो उसमें क्या होगा? तो उसके जो LRs हैं that can compound the offense. ठीक है, अब क्लॉज 5 क्या कहता है? इन द फॉलोइंग केसेस नो कॉम्पोजिशन शैल बी अलाउड विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट, वेयर द एक्यूज्ड इज कमिटेड फॉर द ट्रायल, लीव ऑफ द कोर्ट टू व्हिच द ट्रायल इज कमिटेड। कौन से कोर्ट की हमको लीव लेनी पड़ेगी? जिस कोर्ट में कमिट किया गया है। दूसरा, अक्यूज्ड कन्विक्टेड एंड अपील इज पेंडिंग, तो लीव बाय द कोर्ट बिफोर व्हिच द अपील इज पेंडिंग। क्या कंपाउंडिंग ड्यूरिंग रिविजन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। और अगर कोई प्रीवियसली कन्विक्टेड है तो उसका कोई भी ऑफेंस जो है वो कंपाउंड नहीं होगा। और इफेक्ट ऑफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगेन,
फॉर योर प्रीलिम्स कि क्या होगा अगर हमने कंपाउंडेबल ऑफेंस में कंपाउंड हो गया ऑफेंस, दैट वुड अमाउंट टू acquittal of the offense. This is very important points to remember. Further, it provides no offense other than those which are mentioned in this sections are compoundable. All right. Now this is the case regarding this Maheshchan versus State of Rajasthan, B.S. Joshi versus State of Haryana, State of MP versus Lakshmi Narayan and others. Okay, now we have next question. How many fundamental principles are provided in section 3 of Juvenile Justice Act 2015? 12, 14, 16 or 18? This is answer is 16 and it was from the simplified notes of the Edzorb premium. देख लेते हैं सेक्शन 3 में 16 प्रिंसिपल्स हैं. क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं. Presumption of innocence है, right to participate and heard है, best interests of the child is to be seen, and further family responsibility by the biological or adoptive or foster parents, child safety from any harm, abuse or maltreatment, positive measures for the development and non-stigmatic semantics pertaining to the child. And further there are more principles which are provided here. Now the next question. Under Indian Penal Code, when the imprisonment awarded for the solitary confinement shall exceed 3 months, the solitary confinement shall not exceed dash in any 1 month of the whole of the imprisonment awarded. The correct answer is 7 days. Solitary and confinement होता है जहाँ पर आपको एकदम isolation में रख दिया जाता है, and it was from the simplified notes of the Edzorb law premium. अब क्या है maximum limit क्या है 14 days at a time, और दोबारा solitary confinement देने से पहले there must be a gap of at least 14 days. And further, where entire period of imprisonment exceeds 3 months, in that case, 1 महीने में solitary confinement shall not exceed 7 days. ठीक है, और उसमें भी गैप होना चाहिए at least 7 days का. Now the next question, question number 58. For the purpose of section 23, the Protection of Children from Sexual Offences Act 2012, which among the following is not correct? No report in any media shall disclose the identity of the child. The publisher or the owner of the media shall jointly and severally liable for the acts and omission of the employee. And further, on contravention of the provision of subsection 1 or 2 of section 23, the accused shall be liable to be punished with imprisonment of either description for the period which shall not be less than 1 year, but which may extend to 2 years, or fine, or with both, or D is none of the above. The correct answer is C here, and it was again from the simplified notes of the POCSO Act. Section 23 provides for the procedure for the media. क्या कहते हैं कि person shall not make any report or the present comments on any child. It prevents from any form of media or studio or photographic facilities without having complete and authentic information which may have effect of lowering the reputation and infringing upon his privacy. Now see, आगे provided है कि no media report shall disclose what address in the photograph, family details, any other particulars which may disclose the identity of the child, neighborhood, school, identity of the child including his name. All right. हालांकि there is a proviso also. The special court competent to try the case under the Act may permit such disclosure in the interest of the child for the reasons to be recorded in right. तो हमने पूरा section 23 पढ़ लिया. अब आपके मेंस में भी अगर short note आता है, then you will be easily able to do that. Further, liability क्या है? The publisher or the owner of the media or studio facility jointly and severally liable for the acts and the omission of his employee. Further punishment is provided. 6 months to 1 year, fine or both. Now the Sampurna Behura versus Union of India, the case law regarding this, and this is the recent case. Further, Nipun Saxena versus Union of India, 2019 case. Okay, now we have question number 59. Which statement with reference to section 101 of the JJ Act 2015 is wrong? An appeal shall lie against an order of the board before the Children's Court. A second appeal shall lie from any order of the court of the sessions passed in the appeal under section 101 clause 2 before the High Court. Any person aggrieved by an order of the Children's Court may file an appeal before a High Court. No appeal shall lie from any order made by the committee in respect of finding that a person is not a child in need of care and protection. The correct answer is B, and it was from the simplified notes of section 101 of JJ Act. ठीक है, 101 provides for the appeals. क्या provide करता है कि appeal against the order made by the committee and board is to the Children's Court. कितने दिन में होगा? 30 days में. अपील अगेंस्ट द डिसीजन बाय द कमेटी रिलेटिंग टू फॉस्टर केयर एंड स्पॉन्सरशिप आफ्टर केयर, इससे रिलेटेड अगर कोई डिसीजन है और उसमें अपील करनी है तो हमारी अपील जाएगी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास. प्रोवाइजो क्या कहता है? प्रोवाइजो सेज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 30 days अपील कैन बी मेड टू द कोर्ट ऑफ सेशंस डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑन बीइंग सेटिस्फाइड दैट द एपेलेंट वाज प्रिवेंटेड फ्रॉम फाइलिंग. क्वेश्चन नंबर 60. फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 363A इंडियन पीनल कोड, द माइनर मींस a person of 18 years, a person under 21 years of age, a female under 18 years of age, a male under 18 years of age. अब जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, इनको हमको बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है क्योंकि जो इनके ऑप्शंस है वो बहुत क्लोजली एक दूसरे से सिमिलर होते हैं. तो अनलेस यू हैव प्रैक्टिस्ड वेल
it would be very difficult for you to mark it correct. All right, so practice बहुत ज़्यादा करनी है, बहुत ज़्यादा बार रिविजन करनी है, तभी आप इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे. इसका करेक्ट आंसर है सी, एंड इट वॉज फ्रॉम द सिंप्लीफाइड नोट्स ऑफ द एड्जॉर्ब लॉ प्रीमियम. सी, यहाँ पर माइनर क्या होता है? इफ इट इज मेल देन ही मस्ट बी अंडर 16 years of age, and if it is female it must be she must be under 18 years of the age. Moving further, next question number 61. Under section 13 of Indian Penal Code, the definition of queen was repealed by Adoption Order 1937, Order 1950, 1938, 1951. The correct answer is 1950. It was repealed by Amendment Order 1950. क्योंकि क्वीन तो अब थी नहीं ना, देश आजाद हो गया था. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 62. Under the Sexual Harassment of the Women at Workplace Act, the constitution of Internal Complaints Committee, at least dash of the total members who nominated shall be women. क्या आंसर है? The correct answer is C. 1/2 क्या होनी चाहिए? Women members होनी चाहिए. And it was from the simplified notes of the Edzorb Law Premium. Chapter 2 provides for the Internal Complaints Committee, and Section 4 provides for it. अब अगले एग्जाम्स में क्या पता सेक्शन आ जाए. अब यहाँ पर प्रॉपर मेंबर और उनकी क्या एलिजिबिलिटी है, दैट इज प्रेजेंटेड टू यू इन अ फॉर्म ऑफ टेबल. टेबल से क्या होता है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अनटेंगल हो जाती है. जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करके जब हम टेबल में लिख देते हैं तो रिवीजन के टाइम पे भी बहुत ईजी हो जाता है पढ़ने के लिए, और वैसे भी आपको मेमोराइज करने में, आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए इट बिकम्स वेरी इजी. लेट्स सी. चेयरपर्सन की एलिजिबिलिटी क्या है? The women working at the senior level as employee, if not available, then nominated from other offices. And further जो अगले 2 members हैं उनकी eligibility provided है, members की eligibility provided है. Further यहाँ provided है कि 1/2 of the total members shall be women. ठीक है. और presiding officer and every member shall hold office for 3 years. Again an important point for your prelims examinations. फिर आगे provided है about the fees and allowances. Okay. Now next question number 63. A soldier fires on a mob by order of a superior officer in conformity with the commands of the law. Work done by A comes under the general exception of the Indian Penal Code. Act done by a person believing himself bound by law. Second, act done by a person believing himself justified by law. Accident in doing lawful act. Act likely to cause harm but done without criminal intent. So the correct answer is A. Believing himself bound by law. The general exception का बहुत important chapters है in the Indian Penal Code for your prelims as well as for your mains. Okay, section 76 से related है. It is about the mistake of fact. Mistake of fact is no offense. See, this is the illustration from which the question came. Okay. Now this is the case law. State of West Bengal versus Shivmangal Singh. जहाँ पर this is the case upon section 76. आगे बढ़ते हैं. Question number 64. Which provision of the Code of Criminal Procedure deals with identification of the person arrested? Section 53A, Section 54, Section 54A, and Section 55A. The correct answer is Section 54A. Now, Section 54A provides for the identification of the person arrested, and yes, this was from the simplified notes of the Section 54A of the Code of Criminal Procedure. ठीक है. कौन आइडेंटिफिकेशन करता है? द कोर्ट हैविंग जुरिसडिक्शन में ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन डायरेक्ट द पर्सन टू सब्जेक्ट हिमसेल्फ टू आइडेंटिफिकेशन बाय एनी पर्सन एज द कोर्ट मे डीम फिट. इसी को बोलते हैं हम टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड. ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. Under Section 65 of the Indian Penal Code 1860, the term for which the court directs the offender to be imprisoned in default of the payment of fine shall not exceed 1/4 of the term of imprisonment, which is the maximum fixed for the offence. Yes, this is the right answer. 1/4 से ज़्यादा exceed नहीं करना चाहिए. And this was from the simplified notes of the Section 65. Section 65 लिमिट ऑफ इम्प्रिजनमेंट. अब देखो ये पिक्चर से आपको दिखा दिया. आपको पता है पिक्चर्स का क्या यूज होता है? जब आप अपने खुद के भी नोट्स बनाते हो, यू मस्ट इंक्लूड पिक्चर्स एंड लॉट ऑफ पिक्चर्स. रीजन बीइंग, एक टेक्स्ट को पढ़ने में हमें जितना टाइम लगता है ना, उससे कई गुना कम टाइम हमें लगता है एक पिक्चर को अपने दिमाग में बिठाने में. और टू बी स्पेसिफिक 0.013 सेकेंड्स में हमारी पिक्चर हमारे दिमाग में बैठ जाती है. आप सोचो कि रिटन पढ़ने में उसको कितना टाइम लगता है. जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, जब हम माउंटेन्स में जाते हैं तो वहां पर कई सारे पत्थरों पर ऐसे बना हुआ होता है कि मतलब कुछ स्टोन्स गिरते हुए दिखाई देते हैं. ठीक है, वो लोग क्या कर सकते थे? वो लोग लिख सकते थे आगे लैंड स्लाइडिंग एरिया है, आगे ध्यान से जाओ या आगे मत जाओ, वटएवर. पर क्या कोई उसमें टेंशन देता या फिर इतना टाइम लगता उसको पढ़ने के लिए? कितना ज्यादा टाइम लगता. आप जो भी ड्राइवर है वो जैसे ही उस पिक्चर को देखता है उसको पता चल जाता है आगे लैंड स्लाइडिंग एरिया, एंड ही टेक्स केयर ऑफ दैट.
तो इसीलिए अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स. यूज ऑफ पिक्चर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप देख रहे होंगे कि हमारे डॉक्यूमेंट में भी देयर आर लॉट ऑफ पिक्चर्स एंड एग्जाम्पल्स एंड द शॉर्ट स्टोरीज. इन सबका अल्टीमेट पर्पस क्या है? ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए और बहुत ईजिली समझ में आ जाए. ऑल राइट. तो आप भी जब अपने नोट्स बनाओ, यूज दीज टेबल्स, फ्लो चार्ट्स एंड पिक्चर्स, एग्जाम्पल्स, इंक्लूड एज मच एज यू कैन. Okay, now we have this case Shantilal versus State of MP. Section 53 और 64 में difference बताया गया इसमें. Okay, now question number 66. Under section 41 of the Code of Criminal Procedure, whom among the following police arrest without the warrant? Who commits in presence of the police officer a non-cognizable offence? Who commits in presence of a police officer a cognizable offence? Who commits in presence of the magistrate a non-cognizable offence, or none of the above? The correct answer is A. And it was from the simplified notes of the section 41. ठीक है. सेक्शन 41 इज अबाउट व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट. ऑल राइट. कब अरेस्ट कर लेती है? इसमें ये दिस सेक्शन इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट. सेक्शन 41 आपका मेंस का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है. ठीक है. व्हेन कॉग्निजेबल ऑफेंस इन द प्रेजेंस ऑफ द पुलिस ऑफिसर, कॉग्निजेबल ऑफेंस व्हेन पनिशेबल लेस देन और अप टू 7 years, और उसमें ये कंडीशंस भी फुलफिल होनी चाहिए. क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है, रीजनेबल कंप्लेंट है, या फिर रीजनेबल सस्पेशन है. एंड फर्दर फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द कमीशन ऑफ फर्दर ऑफेंस, for the proper investigation of the offence, preventing from causing tampering or the disappearance of the evidences, to prevent the inducement, threat and promise, and unless the person is arrested, his presence needs to be ensured. Unless the person is arrested, his presence needs to be ensured, and PO shall record the reasons in writing. All right. अब आगे इसके और clauses हैं. Cognizable offence, punishable more than 7 years, or life imprisonment or death. All right. And further, these are other points. He is a proclaimed offender. Stolen property is in possession. Obstructs PO in execution of his duty. He is a deserter from the army. Offences committed outside India for the breach of rule, and the request to arrest from the other police station. ये पूरा आपका section 41 है. ठीक है. All right. आगे बढ़ते हैं towards our next question. ये देखो आपको पूरा section यहाँ provided है. ठीक है. Now section 67. Section 143 to 147 of Negotiable Instrument Act 1881 came into force on 6th February 2002, 6th February 2003, 1st April 2002, 1st April 2003. The correct answer is B. And this was from the Negotiable Instruments Module 2 Edzorb Law Bank. ठीक है. ये आपको प्रॉपर सेक्शंस का बाइफर्केशन है, कब इंट्रोड्यूस करा गया है और क्या सिग्निफिकेंस है उस अमेंडमेंट की, दैट इज प्रोवाइडेड टू यू. आप बताओ, इंटरनेट पे ढूंढने पर भी आपको इस तरह से कंसाइज फॉर्म में और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में डेटा नहीं मिलता. नाउ क्वेश्चन नंबर 68. बीइंग इन पोजेशन ऑफ द फॉल्स वेट और मेजर इज अ पनिशेबल ऑफेंस अंडर सेक्शन 264, 265, 266 और 267 ऑफ IPC. द करेक्ट आंसर इज C. एंड इट वाज फ्रॉम द simplified notes of the Edzorb Law Premium. Now question number 69. A is tried for the murder of B by intentionally shooting him dead. In trial, the irrelevant fact is A was in habit of shooting at people with intent to murder them. Yes, this is the incorrect option. And it was from the simplified notes of the section 14 of the Edzorb Law Premium. ठीक है. Section 14 is about the facts showing the existence of the state of mind or body or bodily feeling. Okay, state of mind में क्या क्या आ जाता है? नेग्लिजेंस, रैशनेस, इल विल, गुड विल, इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ. अब इस पे ये क्वेश्चन आ जाता है. अब हमको ये पॉइंट्स याद रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें से कौन सा ग्राउंड है या कौन सा नहीं है. दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर योर प्रीलिम्स. जनरली किसी आपकी हैबिट है किसी को शूट करने की, तो वो इररिलेवेंट फैक्ट है इन द केस जहां पर आपने एक पर्टिकुलर आदमी को मारा है. हाँ, अगर आपने उसी इंसान को बार बार पहले भी मारने की कोशिश करी है, देन दैट वुड बी अ रिलेवेंट फैक्ट. नाउ सी दिस. द क्वेश्चन अरोज वेदर द गब्बर किल्ड सांबा. It cannot be shown that Gabbar is in habit of killing people. However, it may be shown that Gabbar had previously shot Samba. This is what I was talking about. A previous conviction है. Explanation 2. When the previous commission by the accused of an offence is irrelevant, the previous conviction of such person is also a relevant fact. Moving further, question number 70. The judgment passed by Honorable Supreme Court in Hardeep Singh versus State of Punjab deals with section 311, 41, 313 and 319. The correct answer is 319. And it was from the simplified notes of the Edzorb Law Premium. See, यहाँ पर एक case provided है. This is 2014 AIR. Okay, now moving further. The whole case is given to you with the issues and their judgments. क्योंकि ये एक important case law है.
All right, so this is it for the session. In the next session, we will be dealing with the language portion. जो हिंदी इंग्लिश के questions आते हैं, we will be dealing with that. ठीक है? So until you meet again, keep learning law, keep working hard, and keep giving your 100%. Because when you signed up to become a judge, to give this exam, to continue this journey, you also signed up for all the hard work that it requires. Be it sleepless nights, be it solving the thousands of questions, be it writing the mains answers, writing, doing the translation, and everything. All right. So keep working hard, keep shining. Take care. Bye bye.